Students, today what we are doing, we are making the graph of sinx, and then from that we will learn how to make for sin inverse x. Okay. So first of all, let's see what is the graph of sin x. Here, when we move from this 0, then what we get here, sin 0, 0, and then here pi by 2, that is 1, and sin pi, that is equal to 0. Then same here, when we increase the value of the angles, then like this graph we will obtain. Okay, so again I am telling it, just listen it. Here, as you see, this is sin 0, sin 0, 0 at the this value is 0. Then at pi by 2 it is 1, sin pi by 2 it is 1. Then sin 180 it is 0, sin 3 pi by 2 value is minus 1. Okay, sin 2 pi it is 0, 5 by 2 it is 1. Okay, so again let's see this. We have the sin 0, 0. Now sin pi by 2, can you see it here, black mark, I have marked sin pi by 2 it is 1. Then move it down 0 and move it here, it is minus 1, then 0 to pi, and here 5 by 2. Okay, then make for the negative. For negative, we will take the values, that is minus pi by 2, then minus pi, minus 3 pi by 2. Okay, and we obtain this graph. Okay, now what we are doing here, we find out the value of sin inverse. हम क्या करेंगे अब, साइन इनवर्स के लिए x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मींस इनवर्स ऑफ दिस. ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, दैट इट मस्ट बी 1 1 1 1 होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग ऑन टू 1 1 and on 2. Okay, so let's check it whether this is 1 1 or not. So by graph, how to check whether the given is a 1 1 or not. Here we are doing horizontal line test. क्या करेंगे हम, horizontal line test करते हैं. Okay, okay, so let's see this. Here, can you see it? Here, when I move this horizontal line to our graph, then what we observe, it cut the graph at these points. ये जो points है इनके ऊपर cut कर रहा है. Okay, we will mark it. कहाँ कहाँ कितनी कितनी values, देखो यहाँ ये point, this point, and this one also at this point, and another one is this point. Wait, just wait it. I am clearing it. Yes, you can see it here at this point, A, B, C, and here D. Okay, so for these all values, ये सभी values के लिए जो हमारे पास value है किसकी, sin x की, that is same. For all these angles, for all these value, it is same. Okay, means function is many one. Function is many one. 1 1 तो नहीं है. It implies we have to what? We have to restrict the domain. जो हमारी सॉरी जो डोमेन होगी उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वैल्यूज को फिक्स कर देंगे. ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस. देखो here what we do in this, we first take the values from this 0 से पाई तक वैल्यू लेते हैं, 0 से पाई. तो 0 से पाई तक, can you see it here? If you take this one, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू डोमेन लो, तो वैल्यूज कहाँ कहाँ रिपीट होंगी. अगेन टेक द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, है ना, दोबारा से हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट करते हैं. जैसे ही टेस्ट को करोगे तो आप देख सकते हो दे कट एट दिस पॉइंट, है ना, 0 से पाई पर अगर आप उसको मूव करोगे तो दिस कट एट 0 0 पे कट कर रहा है, और किस पे कट कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है. सो इट इज अगेन नॉट अ 1 1 फंक्शन. अभी दोबारा से ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, now the next is what we do here, we take the different value. अब देखो दोबारा से हम क्या करते हैं, अलग वैल्यूज लेते हैं. कैसे वैल्यूज लेंगे, here I am taking here from minus pi by 2 to pi by 2. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया. ठीक है, अब देखो इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 to pi by 2, लेट्स सी दिस.
Here we have this one from minus pi by 2 to pi by 2. This is minus pi by 2. Okay. And here this is our pi by 2. ये वैल्यू जो है वो क्या हमारी pi by 2. Can you see it? Can you see it here? Yes. So this is the फिक्स वैल्यू है ना. ये हमने इसको जो डोमेन है उसको क्या किया, श्रिंक कर दिया. और श्रिंक करने पर अब दोबारा से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को. क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ओके. सो नाउ जस्ट मूव दिस लाइन. अब जैसे ही मैं इस लाइन को मूव करूंगी फ्रॉम दिस पॉइंट, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ पर ग्राफ जो है वो हमेशा क्या कर रहा है, बार बार सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है. इट कट एट वन पॉइंट इम्प्लाइज नाउ इट इज 1 1. अब हमारा जो ग्राफ है वो कैसा हो गया, 1. ओके. सो दिस इज हाउ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड मेक दिस फंक्शन 1 1. ओके. और ऑन के लिए वी नो हर इनपुट के लिए आउटपुट के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए. सो फॉर ऑल दीज वैल्यू वी हैव द आंसर. हम सबके लिए क्या होगा, इसके लिए हर एलिमेंट के लिए क्या होगी, प्री इमेज होगी. ओके. नाउ what we do, we find out the sin versus x. अब कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. we have sin x के लिए तो ग्राफ था ही मेरे पास. अब हम क्या करेंगे, sin इनवर्स x के लिए देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा क्या होगा. ओके. सो लेट्स सी दिस here. we take the mirror image. हम क्या करते हैं बेटा, मिरर इमेज लेते हैं. मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी ग्राफ होता है, कैन यू सी इट हियर, आप देख सकते हो, जो भी आपके पास whatever the graph you have, this is the graph. For this graph the mirror image is for this point up to here, it is this, and for this we have this. So this is the graph of sin versus x. ये हमारे पास क्या होगा, sin versus x का ग्राफ होगा. Okay, make it more, just wait, I'm expanding it. Okay, so just a minute, I am just making it for sin x. Can you see it here? This blue color represent क्या कर रहा है, represent करता है, किसको represent करता है, हमारे ग्राफ. ठीक है. और ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, हमारा sin x का होगा. This is the graph of sin x. Okay. Now just make the reflection. अब हम क्या करते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन, ये देखो बीच में जो मैंने लाइन ली है, this line is representing a mirror, कि ये पूरा का पूरा क्या है, मिरर. अब यहाँ से इस मिरर से इस ग्राफ की रिफ्लेक्शन बनानी है. ठीक है. तो कैसे करेंगे, देखो, this one. Can you see it by the red line? जो रेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, that this is the graph of sin versus. Okay, so like this, first what we will do, we make the graph. हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे, sin x, cos x, tan x, and then what we do, we find out the inverse. उसका inverse find out करेंगे. By what method? By making this mirror image. जो भी इमेज होगी उसका क्या करेंगे, मिरर करेंगे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. यू ऑल हैव टू रिवाइज. क्या करना है, आपको रिवाइज करना है. व्हाट the functions, the graph of sin x, cos x, domain, codomain. क्या उसकी domain होगी, क्या उसकी codomain होगी. So from there what we learned, that if we restrict the domain from minus pi by 2 to pi by 2, जैसे मैंने उस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया तो हमारे पास आंसर आएगा. अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या मैम आगे भी ये भी तो हो सकता था, दैट इज ऑल्सो सेम, बट स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने क्या किया बेटा, इसको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक रिस्ट्रिक्ट किया. ओके. सो लाइक दिस यू मेक द ग्राफ ऑफ cos cot. ओके.